Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel Z Educate Zanafan here. I hope everyone is fine and doing great guys. Today I am back with my new video. Let me share some points with you that previously I have taught you about nouns. What are nouns? What are concrete noun, abstract noun, common noun and proper noun? That was lesson 1. You can find this video, link is given in the description box. Now today is our lesson 2 time. So let's move towards. We have learned about noun. Now let's see how we can make one singular noun into plural nouns. There are many different ways to make it, but there are certain rules. If you are writing a word with a singular one, then how you have to make it plural. मतलब अगर आप एक चीज किसी सिंगल उस पे लिख रहे हैं तो उसको आप डबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप उसको प्लूरल कैसे करेंगे, आपको अच्छे से पता है. आई हैव टीच यू अबाउट दिस दैट नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड आइडिया. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, a single person, a one person, singular means we are talking about a person. और जब किसी एक बंदे की एक जगह की बात करते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं one person, one हैदराबाद, या हम इस तरह लिख सकते हैं a person, एक इंसान, a हैदराबाद, a cup, cup is your thing, a cow, one cow, और an idea or a idea. Okay, अब जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं एक से ज्यादा चीजों की, एक से ज्यादा चीजों की. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोर देन वन पर्सन, दो इंसान, तीन इंसान, एक दो जगहें, तीन जगहें, चार जगहें, 10 जगहें, 100 जगहें, मतलब एक से ज्यादा. जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की. ठीक है, सो आई होप ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर में क्या फर्क है और प्लूरल में क्या फर्क है. सिंगुलर मीन्स ओनली वन, एक चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं इन अ नाउन, और प्लूरल मीन्स आप एक से ज्यादा नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब हम एक से ज्यादा नाउन्स के बारे में बात करते हैं तो हम किस तरह उसे राइटिंग में लिखते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी द रूल नंबर 1. Most singular nouns need an s at the end to be become plural. अब आपने देखा होगा, आपको अच्छे से ये याद भी होगा कि हमारे चाइल्डहुड में जब हमने पढ़ा था तो हमेशा हमसे ये कहा जाता था कि अगर आपको किसी चीज को प्लूरल करना है तो सिर्फ एस लगा दें. ऐसा नहीं है कि हर चीज के आगे एस लगता है, यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं. ठीक है ना, वो रूल रेगुलेशंस क्या है, लेट्स हैव अ लुक. Up for suppose a book. Book is your thing. A noun is the name of person, place, animal, thing. Book is a thing. I am talking about only one book. अभी मैं एक book के बारे में बात कर रही हूँ, a book. तो उसका plural क्या होगा, books. आपने s लगा दिया. ठीक है, a cow, cows. Kite, kites. Window, windows. Building, buildings. ये तो हो गए कुछ सिंपल आपके सिंगुलर जिनको आपने प्लूरल किया, मतलब आपने एक से ज्यादा बना दिया. अब चलते हैं कुछ ऐसे नाउन्स के ऊपर जिसको जब आप प्लूरल करेंगे तो उनके आगे एस नहीं लगेगा, उनके आगे आई ई एस लगेगा. और कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके आगे सिर्फ एस लगेगा. अब आपको ये कैसे पता चलेगा, हाउ यू विल कम टू नो दैट वेयर यू हैव टू यूज आई ई एस एंड वेयर यू हैव टू यूज एस. इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये बहुत मुश्किल होता है कि इतने सारे लफ्ज याद करना कि जब आप उनको प्लूरल करें तो उनके आगे आई ई एस लगाएं, और जब आप उनको सिंगुलर करें तो कुछ भी नहीं लगेगा. और कुछ ऐसे सिंगुलर्स हैं जिनके आगे आपने सिर्फ एस लगाना है. So काफी लोग ये कहते हैं, many people said that if your word is end with the y, you will use ies, but it's not like that. Over here, a singular word is lady. Lady means एक औरत. अगर मैं एक औरत singular एक औरत की बात कर रही हूँ, LADY, lady, तो जब हम उसको plural करते हैं, it will become ladies, IES. सिर्फ s नहीं लगेगा. उसकी वजह ये है कि लेडी की जो स्पेलिंग में आपका y है, the y is an on consonant y. Now what is consonant? आपको उम्मीद है कि पता होगा consonant and vowels के बारे में. A to Z is alphabets. A से लेके Z तक we have 26 alphabets, and in from those 26 alphabets we have taken out 6 vowels.
Mostly people still know that there are 5 vowels. No, there are 6 vowels. How? A, E, I, O, U, and sometimes Y. Y is coming in your consonant and vowel too. It depends on the condition and situation and the word. See, for suppose lady, अब इस वक्त lady का Y जो है वो आपका consonant Y है. So we were using IES. If in your singular word the lady Y comes with consonant Y, so you will use IES. Monkey. अब monkey में जो आपका Y यूज हो रहा है, that's a vowel Y. जब वाउल वाला Y आएगा तो आपको सिर्फ S लगाना है. ये जरूरी नहीं है कि आपका जो वर्ड Y पे एंड हो रहा है उसके आगे आप IES ही लगाएंगे. नो, दिस इज नॉट कंपल्सरी. इट डिपेंड्स कि वो कंसोनेंट का Y है या आपका वाउल का Y है. ठीक है. अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि आपका वो Y का वाउल है? सो सिंपल फॉर्मूला, इट्स अ टिप फॉर यू. प्लीज रिमेंबर दिस टिप. If there is a vowel A, E, I, O, U right before the Y, right before the Y मतलब आपकी जो स्पेलिंग खत्म हो रही है उसके एंड में अगर आपके पास Y है और उससे पहले अगर आपका वाउल है, जैसे मंकी में आपका E है, E is your वाउल, तो हमेशा उस लफ्ज के एंड में S लगेगा, IES नहीं लगेगा. अगर आपकी स्पेलिंग के एंड में Y है और उससे पहले आपका कंसोनेंट है, D is a consonant, तो आप लगाएंगे IES. You will use IES to make it plural. बहुत सिंपल है. अगर आपके वर्ड के एंड में और उसके बिफोर वाउल आ रहा है, एंड में आपका Y है और उससे पहले अगर वाउल है, so you are going to use S. And if your word ends on Y and before Y there is a consonant letter, so you are going to use IES to make it plural. Plural means एक से ज्यादा. I hope it's clear for you. बहुत easy है. It's a really small tip for you. Just make sure to remember this tip and you will be never ever be confused that which one is the consonant vowel and which one is the vowel. Let's move to some more examples. For suppose in singular word tomato and in plural form we say tomatoes. Piano, pianos. Now see this tomatoes ends on O. So O is this is your consonant O. This is your consonant O. Although this O is your vowel, ये vowel है A, E, I, O, U. पर यहाँ पे हम इस O को as a consonant O ले रहे हैं. That's why we are using ES. अब कुछ words के आगे आपका ES लगेगा और कुछ words के आगे आपका सिर्फ S लगेगा. अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि if your before Y if a vowel is there so you will use S. यहाँ पे Y से पहले अगर vowel है तो आप S यूज करेंगे. ठीक है. बट यहाँ पर अगर आपका vowel से पहले consonant है तो आप ES भी यूज करेंगे और S भी यूज करेंगे. ये आपको ऐसे ही मेमोराइज करना पड़ेगा. इसका कोई टिप नहीं है. So you have to use it by like this. Because most of words end with consonant O, we will use ES. जो words आपके consonants के end पे होते हैं, we will use ES. And those words which we are use as, there is no particular rule for that. ठीक है. इनके लिए कोई rule नहीं, कोई tip नहीं है. So you have to memorize them accordingly. Tomato, tomatoes. Piano, pianos. Repeat after me. Tomato, tomatoes. Piano, pianos. So guys, now we have practiced tomato, tomatoes, piano, pianos. In the end, have you heard the sound? There are 3 different sounds at the end of the plural word. S, z, is. First sound is s. Second sound is z. And the third sound is. When we are making something plural, at the end, the object sound is different. For suppose, cat. Cat is a plural form, but if we will make it, cat is a singular form, and if we will make it plural, so it will become cats. Cats. Now at the end, which sound you can hear?
Now hear it carefully. Cats. Cats. Now can you hear the S sound? Yes, absolutely right. So repeat after me. Cats. Cats. Schools. Schools. Now when we are making school to a plural form, it will become schools. Schools. Now in the end, you will hear a Z sound. Schools. Repeat after me. Schools. Good job. Teams. Teams. S is there, but the sound is different. So when you are pronouncing it, please pronounce them correctly. We have practiced S sound and Z sound. Now further, we are going to use I and Z sound in the next slide. Okay, guys, I have told you about rule number 1. Now let's move to on rule number 2. Rule number 2 of nouns. Noun is the name of person, place, animal, and thing. And right now we are talking about the singular noun and the plural nouns. How we will make them singular? If we are writing cat, so that plural form will be cats. School, schools. Tomato, tomatoes. Okay, and if your word lady y ends with lady ends with the y, we will use ies. But if we are talking about a monkey, so your monkey y is a vowel y, so we will use s. I'm repeating those things again, that you should memorize those things again and again. That's why I'm repeating them before going to a rule number 2. So rule number 2 is noun that ends with certain letters. Those nouns that ends with the certain letters, for example, singular nouns ending in s. अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो nouns, जो words, जो noun words आपके s पे end होते हैं. डबल s पे, डबल s का साउंड है s h, c h, x, z, और es. जो आपकी नाउन की स्पेलिंग्स s, डबल s, sh, ch, x, z और es पे एंड होती है, उसके प्लुरल फॉर्म हमेशा आपके क्या लगेंगे? es. जब आप उन्हें प्लुरल करेंगे, आप क्या यूज करेंगे? es. और जब हम es लगाएंगे तो उसकी आवाज आएगी is. जब हम किसी भी वर्ड के आगे es लगा के उसे प्लुरल करेंगे तो उसका साउंड आएगा is. फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे मैंने आपको बताया था ch. ओके, तो वॉच में आपके क्या है? वॉच, वॉच. इसके एंड में ch है, तो हमने आगे क्या लगा दिया? es. Why? Because my word ends on ch. My singular word ends on ch. So when we are making it plural, जब हम इसे plural करेंगे, we will use es. Watch, watches. Glass. Now see, double s is there. Glasses. Fox, foxes. Why fox? Because in the end there is a x. I told you. See, double s, sh, ch, x, and s or z. With these ending letters we will use es. जो लफ्ज हमारा इन letters के ऊपर end हो रहा है, हम उसे plural करने के लिए es यूज कर रहे हैं. Bush, sh in the end. Bushes, bush, bushes. Dish, dishes. Box, boxes. Let's do one more time practice. Repeat after me. Watch, watches. Glass, glasses. Fox, foxes. Bush, bushes. Dish, dishes. Box, boxes. Good job, guys. Well done. Note that some singular nouns ending in s or z require that you double the s or z before ending es. One more
note is there that you have to remember that if your word ends on s or z, अगर आपका कोई वर्ड s और z पे एंड हो रहा है, ठीक है, उससे पहले ई एस लगाने से पहले, जैसे कि हमने सी एच पे हमारा वर्ड एंड हुआ था, हमने ई एस यूज किया, डबल एस पे एंड हो रहा था, वे यूज ई एस, एक्स पे एंड हो रहा था, वी हैव यूज ई एस। बट अगर हमारा कोई वर्ड एस या जेड पर यूज हो रहा है तो ई एस लगाने से पहले हम उस जेड को डबल जेड लिखेंगे। अगर एस पे एंड हो रहा है तो हम पहले डबल एस लिखेंगे फिर ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्विज, क्विज का सिंगुलर है क्यू यू आई जेड, क्विज, पर जब हम इसे प्लुरल करते हैं तो हम इसके क्या करेंगे, डबल जेड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको प्लुरल फॉर्म में बना रहे हैं, ये इसका रूल है, ठीक है। हम जेड दो दफा लिखेंगे। अगर हमारा ये वर्ड एस पे एंड हो रहा था तो हम डबल एस करके फिर ई एस लिखेंगे, ठीक है। ओके, noun ending in f or fe require that change the f or ef to a v and then add es at the end। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर आपका वर्ड s या z पर एंड हो रहा है तो आपने पहले z को टू टाइम्स लिखना है, आपको एक दफा z लिखना है और फिर आप es लिखेंगे। अगर s पे भी एंड हो रहा है तो आप एक s लिखेंगे, देन यू आर गोइंग टू राइट es, तो आपका प्लुरल फॉर्म बनेगा। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ वही सिचुएशन है पर थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कैसे? इफ योर वर्ड एंड ऑन एफ और ई एफ, अगर आपका कोई सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ड एफ या एफ ई पर एंड हो रहा है, फॉर सपोज नाइफ, नाइफ का वर्ड एंड किस पे हो रहा है, एफ ई पर, तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट सिंपली टू अ वी, आप सिंपली क्या ऐड कर देंगे उसकी जगह पर वी, आप एफ को हटाकर क्या कर देंगे, वी लिखकर आप फिर लगाएंगे ई एस, एड देन एड एन ई एस। Okay, so knife. Now knife word ends with fe. So we will change it in plural form knives. अब देखिए आपने, मैंने what I have done, I have removed fe and I have put v and then es to make it plural. मतलब knife, one knife, knives, more than one, दो, चार, 10, 100, 15, ठीक है। Leaf, अब leaf के end में भी what is this letter, which letter is this, f, yes, leaf with singular form in the end is there is f, so what I am going to do, I will remove this f and I will write v and then es to make it plural. Now see the difference, l e a f, leaf, and the plural form will be l e a v e s, leaves. Same as goes for half, halves, wife, wives. Now see, now wife word ends with fe. I told you if your words ends on f or fe, you have to add v. You have to remove f or fe. You have to add v and then you will write es to make it plural. Wife, wives. Thief, thieves. Okay. Now let's see one few of more words that change their plural forms. Noun that ends in y often require that you change the y to an I. Now, those noun words which ends on y often require that you change the y to an I. Now, if your words end on y, then you have to change it on I and then add an es at the end to make them plural. As I told you over here, if your words end on f or fe, you have to make it v. आपको word अगर f या fe पे खत्म हो रहा है तो आपने v लगाना है. Then you have to write es. Same goes over here. If your words ends on y, अगर आपका कोई word y पे end हो रहा है, for suppose baby, baby words end on y, so you have to add I. Y की जगह आप क्या लिखेंगे, I, and then you have to write es to make it plural. Baby, babies. Berry, berries. Bunny, bunnies.
Guys, do remember I have told you about the previous one about monkey and ladybug. That is something different and this is something different. Few words are exactly be different. So I told you about if your B is a consonant, Y से पहले अगर आपका consonant है, you will use I, E, S. Same goes over here. The same formula is editing over here. वही formula है जो मैंने आपको टिप पीछे दी थी कि अगर आपका कंसोनेंट y पे एंड हो रहा है वर्ड तो आप यूज करेंगे IES। और आपको कैसे पता चलेगा कंसोनेंट y है, क्योंकि y से पहले आपका वर्ड भी कंसोनेंट होगा। B is your consonant, R is your consonant, and N is your consonant too. So we are using IES to make them plural. Baby, babies. Repeat after me, please. Berry, berries. Bunny, bunnies. Good job, guys. Really good. That's okay, guys. Thank you so much. And don't forget to subscribe my channel. I hope you have get the concept and I hope it's clear to you. Inshallah, I'll be with my third lesson of grammar soon. Take care. Bye-bye. Allah Hafiz. See you soon.